Before discussing the confidence interval for the different population parameters, first we are going to explain the procedure how we can develop this confidence interval. बेसिकली इसका मैकेनिज़्म क्या है कि कैसे हम इंटरवल एस्टिमेशन जो है इसके पीछे मैकेनिज़्म कैसे चल रहा है. तो पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये कैसे प्रोसेस कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, और इसके बाद फिर हम डेवलप करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन पैरामीटर. तो लेट्स स्टार्ट. Let x be a continuous random variable with the cumulative probability density function, that is f of x, and that is, you know, that is probability x is less than or equal to small x. Suppose we are interested to find the values of the xl and xu. Here I just represented small xl and small xu. Small x represent the lower value of the interval, and xu basically represent the upper value of the interval, such that the probability x1 less than or equal to x less than or equal to 1 minus alpha. That is actually the general format. According to the definition, हमने यही definition इसकी पढ़ी है कि probability of, उधर हमारे पास क्योंकि हम इन जनरल केस देख रहे थे, थीटा कैपिटल थीटा की फॉर्म में हम लिख रहे थे, इधर हम एक स्पेसिफिक केस के हवाले से देख रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे इसका मैकेनिज़्म इंटरवल एस्टिमेशन का चलता है. तो एक्स एल के साथ इसको हमने रिप्रेजेंट किया और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा. दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल एस्टिमेशन. अब बेसिकली वन वे इज टू चूज एक्स एल एंड एक्स वे इज दैट कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके एक्स एल और एक्स यू की वैल्यू को फाइंड आउट करें. तो हाउ वी प्रोसीड फॉर दिस वन? सो दैट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू alpha over 2 and the probability that x is greater than or equal to xu. इसको हम xl कर लेते हैं क्योंकि ये लोअर लिमिट को शो कर रहा है, और xu बेसिकली इट रिप्रेजेंट द अपर लिमिट, दैट इज अल्फा बाई 2. बेसिकली जो सिचुएशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी. ये हमारे पास PDF है और that is the x, that is the point xl हमारे पास जो है xl है, और यह हमारे पास पॉइंट है xu, that is the upper limit. और बेसिकली ये जो हमारे पास है it represent the alpha over 2 because we know that is 1 minus alpha. 1 minus alpha हमारे पास ये लिमिट है और alpha by 2 यही हमारे पास ये एरिया होगा. तो बेसिकली हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डिटरमिन करना है सो दैट वी कैन से दैट कि दिस इज लेट्स से सपोज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा अगर अल्फा हमारे पास 5% है. अगर अल्फा हमारे पास 1% है तो दिस एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड इन दिस केस इट इज़ 99%. सो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन सी दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स एल इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा बाई 2, एंड सिमिलरली the probability in term of distribution x is greater than or equal to x mu, and that is alpha over 2. So from here we can also write down in term of distribution function, that is f of x of what x, that is xl, and that is equal to alpha by 2. And similarly the probability in term of distribution form अगर हम लिखें तो that is x f of x, and that is xu, and that is actually 1 minus alpha over 2. बेसिकली हमने इसको उल्टाया और उसके बाद 1 से माइनस किया तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाई 2 बन जाएगा. तो अगर हमने बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एल, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दूसरी साइड पे चले जाएगा, तो दैट इज इन टर्म ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स, एंड दैट इज एक्चुअली अल्फा बाई 2. एंड सिमिलरली फॉर द अपर लिमिट दैट इज that is xu, and that is equal to f inverse 1 minus alpha by 2. So we explain it with the help of the example. इसको फर्दर हम एक एग्जाम्पल के ये बेसिकली जर्नल इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. सो इफ़ लेट्स से इफ़ z is a normal, it is better to say that standard normal ताकि हम इसको easily understand कर सकें, and then we find the values of the xl and x mu such that the probability that
XL less than Z less than XU, that is actually 0.95. So basically we are interested to find the 95% confidence interval. Here actually you can easily say that alpha is 0.05. So when we are going to find this limit XL, so what is this? This is basically F inverse for the normal distribution, and alpha जो हमारे पास है 0.05 है, तो ये जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा. Because Z is normal distribution, so the distribution function of the normal distribution can be written as phi inverse, that is 0.02. that is the standard notation. तो हमने इसको इसकी standard notation में लिख दिया, and you can see that from the table its value is minus 1.96. And similarly we can write it as XU, and that is again F inverse X, and that is 975, and in term of normal distribution function phi inverse, that is 0.975, and that is 1.96. So thus for the standard normal distribution we have the probability, that is minus 1.96 less than Z less than 1.96, that is 0.95. Generally one can find the 1 minus alpha interval for the standard normal random variable Z. तो हम इसको अगर जनरलाइज करें इस चीज़ को, तो how we can see that, assuming that Z is standard normal, and we defined a point ZP as a real value such that P basically belong to the interval 0, 1, because it is a probability for which the probability capital Z is greater than that point ZP, that is actually P. So in term of standard normal we can write it as, that is phi of ZP, and basically it is greater than, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लिखेंगे तो क्योंकि ये लेस देन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये बेसिकली हमारे पास 1 माइनस p की फॉर्म में आ जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द normal, that is phi inverse, that is 1 minus p. So you can see that the value of the ZP, that is the phi inverse 1 minus p. As we know that normal distribution is a symmetrical distribution, so Z 1 minus p, basically that is minus ZP. So using ZP notation, we can state 1 minus alpha confidence interval for standard normal variate Z as, that is probability minus Z alpha by 2 less than Z less than Z alpha by 2, and that is basically 1 minus alpha. So in this way one can write down the confidence interval in a general form for the standard normal variate.